Welcome back to the channel. So we have completed the histopath part of the basal cell carcinoma and we have started with the treatment part. We were seeing the principles of that must be considered. Okay, in that we will be seeing the different type of treatment modalities. Okay, let's start today's class. Cryosurgery last class में we have seen that it is limited by the depth of freezing achievable unless specialized thermocouples are used. It is limited to superficial BCC with less than 3 mm of invasion. तो ये हम लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे. Now coming to electrodesiccation and cautery. See, electrodesiccation mainly means that it एक particular temperature पे और प्रेशर पे टिश्यू को ड्राई और हीट किया जाता है. ठीक है, तो limited to nodular, ulcerative and superficial type of BCC because of the absolute need for margin assessment by frozen section of the other types. और other types में हम लोग को margin assessment चाहिए होता है frozen section के through, और इसलिए mainly this is limited to electrodesiccation and cautery is limited to nodular, ulcerative and superficial type. Okay. Now coming to Mohs myographic surgery. Micrographic surgery. It enables fine control of the margin of the excised tissue, advantages in the sclerosing morphiform type and all type of BCC around the eyelids and canthal areas. तो फर्स्ट टू जो था हम लोग eyelids और canthal area में के पास अवॉइड कर रहे थे या नहीं कर पा सकते थे, लेकिन Mohs micrographic surgery we can do. Okay, it was first described in 1941 by Frederick Mohs, who used zinc chloride as an in situ fixative. So he used zinc chloride, that is ZnCl2, as a in situ tissue fixative. So ओके हम मोस्ट सर्जरीज मायोग्राफिक सर्जरी क्या है वो हम बताए नहीं है इसमें. अगर आप लोग बोलोगे इफ़ यू वांट टू नो आई विल टेल, क्योंकि उसका 3 स्टेज इंसिजन होता है. फर्स्ट स्टेज में थोड़ा, सेकंड स्टेज में थोड़ा, थर्ड स्टेज इंसिजन, तो ऐसे उसके एक्सीजन होते हैं. सॉरी, तो 3 स्टेज एक्सीजन होते हैं, स्टेज 1 2 3. तो आई हैव नॉट डील कि मेरे को लगा कि ये दिस इज़ सफिशिएंट टू राइट, मतलब उसको उतना डिस्क्राइब करना इज़ नॉट like necessary, but if you guys want you can ask me, I'll tell you कि वो क्या actually उसमें करते क्या है. So हाँ ठीक है. The technique can be tissue sparing and when strictly applied is associated with a high cure rate. तो it is a tissue sparing technique and अगर हम लोग तरीके से किए तो it has a high curation rate. Okay. The wound is left to heal by secondary intention and it often leaves an unacceptable scar. So because it heals by secondary intention, there is a high chances, or there are mostly chances of a scar tissue or scar formation. So this scar formation or this Mohs surgery defect can be reconstructed with the use of local advancement, rotation और rhomboid flaps. तो हम इसको, ये स्कार को या ये जो भी डिफेक्ट होता है Mohs micrographic surgery में, we can reconstruct that by using advancement flap, rotation flap और rhomboid flaps. Okay. Now coming to the fourth one, that is local excision. सर्जिकल एक्सीशन विथ फ्रोजन सेक्शन असेसमेंट इसमें चाहिए होता है, फ्रोजन सेक्शन. नाउ इंडिकेटेड प्राइमरली फॉर लार्जर ट्यूमर एंड फॉर रिकरेंट ट्यूमर्स. तो लोकल एक्सीशन हम लार्जर ट्यूमर के लिए और रिकरेंट ट्यूमर्स के लिए करते हैं. इट रिमेन्स अ रिलायबल सोर्स फॉर ट्रीटिंग या रिलायबल ट्रीटमेंट प्लान फॉर ट्रीटिंग बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ ऑल टाइप्स. Smaller lesions and those located in the areas that can be readily closed should be closed primarily. Larger excision can be managed with split thickness skin graft. तो स्मॉलेस्ट एक्सीशन को हम लोग प्राइमरीली क्लोज कर देते हैं और जो लार्जर एक्सीशन है
तो उसमें जो हमारा होता है, वी जनरली प्रेफर split thickness grafts. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment.